Welcome back, friends. During our last lecture, we discussed how to find out the magnetic field around a current carrying conductor when you know the direction of current. Today, we will be discussing how to find the direction of magnetic field when we are having a coil instead of a wire. Suppose you are having this coil. This is a circular coil and it is connected to a battery, positive end and negative end. The direction of current is from positive to negative. These two arrows they represent the direction of current. If you want to find out the magnetic field due to this current carrying coil, then what you will do? This circular loop you will hold. Suppose you want to find the direction of magnetic field on this particular arm, then you will hold it like this in your right hand. The thumb is pointing in the direction of current, then the direction in which the fingers curl will give the direction of magnetic field, means you will mark it like this. Similarly, when you want to find the direction of magnetic field due to the current in this particular arm of the loop, then again you will hold it in your right hand like this. The thumb is pointing in the direction of current, then the fingers are curling in this direction. Again you will mark the direction of magnetic field like this. So the direction of current, the direction of magnetic field, you can say it is perpendicularly inside the coil or perpendicularly inside the board. What happens when you reverse the direction of current? We have changed the polarity. Here it is positive, here it is negative. So the direction of current is reversed. So again, to find out the direction of magnetic field, you will hold this particular arm of the loop in your right hand. Thumb is pointing in the direction of current, then the magnetic field will be coming outside like this. Similarly, in second case, again you have hold it like this, again it will be coming outside, means when you have reversed the direction of current, the direction of magnetic field is also reversed. In first case, it was perpendicularly inside the board, now it is perpendicularly outside the board. अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास एक वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक लूप है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है. लेकिन अगर हम बहुत सारी लूप्स ऐसे वाइंड करते चले जाएं तो क्या होगा? तो इनफैक्ट होता क्या है बेटा कि जो लूप्स हैं इन सब का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाता है एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेट एंड सच मैग्नेट्स दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की खास बात क्या होती है? सबसे नंबर वन बात क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट्स जो होती हैं दे कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, बट दे कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय सिंपली स्विचिंग ऑफ द करंट थ्रू इट. आप करंट नहीं जाएगा, इट विल नॉट एक्ट एज ए मैग्नेट. Second thing is their polarity can be reversed. By reversing the direction of current, you can change the polarity of this magnet. Suppose earlier it is this pole is north pole, this pole is south pole. If you reverse the direction of current, then the polarity of the magnet will also be reversed. Third thing is you can increase or decrease the strength of magnet. If you increase the current, it will act as a stronger magnet. If you decrease the current, it will act as a weaker magnet. The electromagnets, they can have various shape. They can be in the form of a circle, they can be in the form of any S shape or any zigzag shape. There is a special type of electromagnet that is called as solenoid. Solenoid, it acts as a bar magnet. Now, the thing is, how a solenoid is prepared? A solenoid is prepared by winding an insulated copper wire in the form of a cylinder. और इसके लिए हम जो बेस यूज करते हैं वो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर हम इसको वाइंड करते हैं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रांग होती है. ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. अब बात आती है कि सोलेनॉइड की पोलैरिटी नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है. या तो आप पहले की तरह राइट हैंड थंब रूल यूज करें हर एक कॉइल के लिए, हर एक लूप के लिए सॉरी, या फिर बड़ा इजी सा मेथड क्या होता है, आपने इसकी जो कॉइल है इसकी कॉइल के अंदर, सपोज मैं पहली कॉइल ये वाली कंसीडर करता हूं, दिस पर्टिकुलर, आई मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस. एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने मार्क कर दिया. जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपने इसके अंदर एरो मार्क्स लगा देने हैं और इन एरो मार्क्स की टेल को ज्वाइन कर देना. इज दिस क्लियर? इज दिस एक्टिंग एज एन? नो, this is not acting as an, this is not looking like an N. So there are two poles of a magnet, one is north pole, other one is south pole. If it is not north, then it will be acting as south. Is this clear? Suppose अगर हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी like this,
फिर आप पोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे? फिर से हमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी. अगेन वी विल ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस. वी विल मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट और उसी करंट की डायरेक्शन में हमने दो एरो मार्क्स लगा दिए. इन एरोस की टेल को आप ज्वाइन करते हो. नाउ इट इज लुकिंग लाइक एन. इसका मतलब ये पोल कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल. तो दूसरा पोल कौन सा हो गया हमारा? साउथ पोल. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एक्टिविटी, सिर्फ आपको एन और एस का पता होना चाहिए. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एन इज रिटन लाइक दिस. एन इज नेवर रिटन लाइक दिस. सो व्हेन इट इज नॉट एन, इट विल बी साउथ. Now the second thing is the various factors on which the magnetic field of a solenoid depends. The magnetic field of a solenoid depends on three factors. Number one is the magnetic field of a solenoid is directly proportional to the amount of current flowing through it. Greater the amount of current flowing, stronger will be the magnetic field. Second factor is the number of turns. Greater the number of turns per unit length. मतलब अगर एक 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 टर्न्स है और फिर दूसरे 1 सेंटीमीटर के अंदर सपोज 20 टर्न्स है और इवन इफ इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, तो जो 20 टर्न्स वाला सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और तीसरा आता है बेटा नेचर ऑफ कोर मटेरियल. अगर कोर मटेरियल आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हो जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि ये उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट कर देता है. दे कैन इजीली क्रॉस थ्रू द आयरन और निकल और कोबाल्ट.